इयर कटा खराब हो तुमको ऑडियो हो तो मो आवाज हाँ सर हो तुम देह केमती अच्छी सेमती आ ठंडा टिके रहउची आ अच्छा हमारा केते दिन जाइथिला एसक्यूएल फंक्शन इन पीएल एसक्यूएल स्टार्ट आइथिला ना नहीं मतलब कमेंट कोड जाय सजेइथिला कमेंट कोडटा जाइथिला सर कमेंट कोड माने सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट सर जाइथिला SQL function in PL SQL available in procedural statement single row function not available in procedural statement that is decode and group function right ए सेशन हम जानिबा PL SQL ले कोन कोन procedural statement तमर कोन कोन function तमर यूज होची सिंगल रो पई कोन कोन यूज होची एंड तमर procedural statement जो function उडा available नै जोडा कि decode रे तमर केमिति यूज होची एंड group function कोन तमर यूज होची कोन ग्रुप फंक्शन रे तमर सम एवरेज एगुडा सब हला एटा माने ग्रुपिंग करी गोटे तमर रिजल्ट तमर आसी in SQL function PL SQL provides several predefined functions that can be used in SQL statement most of these functions such as single row number and character function data type conversion function and date and timestamp function right are valid in PL/SQL expression. The following function are not available in procedural statement decode जोटा कि हमारा available नहीं procedural statement भीतर and group function जोटा कि मैं तुमको कहली average mean maximum count sum standard division and variance एवढा सब मोर group function में मोर सब जाए माने range of data टाको से grouping करे कि calculation करे गोटिए तुमको output तुमको show करे right then group function डिकोडटा डिकोडटा तमरो गोटे फंक्शन जोटा कि तमर प्रोसीजर स्टेटमेंट नाही जो कि आगर को अछि तुम जानियो डिकोडटा कोन अछि group function apply to group of rows in a table are therefore available only in SQL statement in PL/SQL block. The function mentioned here are only a subset of the complete list. The SQL function in PL/SQL example देखो get the length of a string गोटे string रो length जानिया पे हेले हमको length function हमको दरकार right गोटे धर गोटे string तमे पास करछ my name is Devashish right तो ए string रो मोर length केते अछि केते size अछि से string तार तार length जदी जानिया पे दरकार ताले मते length function मते यूज करिवा पई पड़ी right जमते एटी मोर गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला d अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर साइज v अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन वैकेट 2 देन सी पास कला यू कैन यूज दिस राइट प्रोडक्ट विथ योर रेडियस फॉर हायर फ्रीक्वेंसी तो एटा होची मोर कंप्लीट स्ट्रिंग ता तो आर लेंथ ता मु केते मोर अछि से लेंथ जानिया पे हेले मते एठी सेही फंक्शन रो भितरे मते एठी लेंथ फंक्शन यूज करिया को पड़िबो एंड से फंक्शन रो पैरामीटर भितरे से वेरिएबल टा को पास कर दे कारण वेरिएबल भितरे वैल्यू ऑलरेडी मु स्टोर कर दी छी यदि से वेरिएबल टा को से फंक्शन भितरे पास कर देबी से फंक्शन कन करियो से वेरिएबल भितरे जो वैल्यू टा अछि ताकू से एक्सिक्यूट करबो एक्सिक्यूट कला पर जो साइज टा आसीबो न्यूमेरिक वैल्यू टा आसीबो सेटा मोर एई वेरिएबल भितरे स्टोर करिक से रख बुझला get the number of month of an employee has worked केते घंटा से काम करछि कहि कि the v tenure months between current date and variable hire date right current date माने केबुट जॉइन हेछि केते जाय से काम करछि आज पर्यंत केते जाय काम करछि से तमरो कैलकुलेशन करिके तमरो मंथ ड्यूरेशन ता तम से शो कर हला SQL function in PL/SQL example, you can use SQL function to manipulate date. These functions are grouped into the following categories, that is number, character, conversion, date, miscellaneous. Using sequence in PL/SQL expression, starting from 11G, declare got a variable declare kala begin, then more as a variable equal to mysql.next value.
नेक्स्ट वैल्यू होची गोटे वैल्यू माने गोटे तमर प्रोटोटाइप टाइप रो गोटे प्रोटोकॉल टाइप रो जे कि नेक्स्ट वैल्यू रो एड्रेस टाकू से एई वेरिएबल भितर स्टोर कर राइट बिफोर 11G रे हमको पूरा कंप्लीट लिखिबा एटा पढैतली बोली बिफोर 11G रे हमको कंप्लीट लिखिबा को पड़ी राइट मोर 11G रे टोटल खाली मु एमते लिखि देले हे जिवो mysql.next value लिखि देले हे जिवो बट मोर बिफोर 11G रे मते कंप्लीट पूरा लिखिबा को पडुतला सिलेक्ट करिवो mysql.next value इनटू कहा को से असाइन करिवो फॉर्म तमरो टेबल नेम तमरो पास करिवो होला एटा सॉरी थला नेक्स्ट वैल्यू करंट वैल्यू सॉरी थला एठू तम स्टार्ट हो सर गोटे मिनिट गोटे लिखि रखिल गोटे देखि दउ हां सुनी रह जा क्लास से में जाओ सर 97 पर पेज नंबर तो जान 97 पर एटा सर ये एटू स्टार्ट हो एटा सॉरी थला नहीं सॉरी एकलाडा अच्छा सर एटू स्टार्ट हो राइटिंग नेस्टेड ब्लॉक सर एजेंडा सर राइटिंग नेस्टेड ब्लॉक नेस्टेड ब्लॉक माने जेंति तम सब क्वेरी जेंति यूज करो सेमति तम पीएलएस को ले भी तम ताकू यूज कर परियो गोटे क्वेरी भीतर आ गोटे क्वेरी तम यूज कर परियो राइट nested block PLSQL block can be nested and executable section begin and end can contain nested block right nested block रे तमरो begin और end भीतर तमको दबा करियो an exception section can contain nested block right जेम तम सब क्वेरी रे जेम दउथलो जे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कस्टमर आईडी फॉर्म अमक टेबल वेयर तापरे तमरो पुनी सिलेक्ट कस्टमर आईडी वगैरह देकी तमरो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी जो दउथलो जेतो सेम जिंस तमरो एठी दबो राइट नेस्टेड ब्लॉक being procedural gives PLSQL the ability to nest statement you can nest block wherever an executable statement is allowed thus making the nested block a statement if you are if your executable section has code for many logical related functionalities to support multiple business requirements you can divide the executable section into smaller block the exception section can also contain nested block right तो हमारा फर्स्ट इनर नेस्टेड ब्लॉक भितरे जो भीतर जो ब्लॉक टा प्रथम एग्जीक्यूट होबो जो आउटपुट आसीबो सेटा आउटर ब्लॉक को से असाइन करिवो देन आउटर ब्लॉक टा तमरो एग्जीक्यूटेबल हो राइट नेस्टेड ब्लॉक देखो डिक्लेयर कला गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला v_outer_ वेरिएबल तार डाटा टाइप देला varchar 2 ता साइज देला 20 देन ता भीतर वैल्यू पास कला ग्लोबल वेरिएबल राइट ग्लोबल वेरिएबल टा मोर असाइन हला कोठी एई वेरिएबल भितरे मोर स्टोर हेकी रहला बुझला इनिशियल स्टेज से पास कर दला देन बिगिन डिक्लेयर तापरे v_inner वेरिएबल varchar टू लोकल वेरिएबल एटा होची मोर बिगिन भितरे मु डिक्लेयर करली आउटर क्वेरीटा मु बिगिन बाहर डिक्लेयर करछि बट बिगिन भितरे आ गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करली जोटा होची इनर वेरिएबल सो जो थरे कि मु वैल्यू असाइन करली लोकल वेरिएबल then begin dbms.output.put_line v_inner variable then outer variable टा को डिस्प्ले कला एटा मोर कोन एटा एई क्वेरी टा यूज होची कोथि पय जे मते आउटपुट जणिया पय तो प्रथमे से इनर क्वेरी टा को इनर वेरिएबल टा को डिस्प्ले कला देन आउटर वेरिएबल टा को डिस्प्ले कला देन अगेन तमरो एंड पर बिगिन रो एंड पर ई एंड पर तमरो पुन थरे से आउटपुट डिस्प्ले कला कहारो आउटर क्वेरी रो डिस्प्ले कला बुझला तो एटा जदी मु एक्सिक्यूट करी त प्रथमे कोडा एक्सिक्यूट हबो तमरो इनर क्वेरी टा इनर वेरिएबल टा एक्सिक्यूट हबो तो सेत पय तमु देखेला प्रथमे कोन लोकल वेरिएबल तापर मोर कोन एक्सिक्यूट होची
ग्लोबल वेरिएबल तो प्रथम तो तापर मते कोन देखेला ग्लोबल वेरिएबल देन बिगिन रो एंड परे तमरो फुन थरे से आउटर वेरिएबल टा डिस्प्ले कला तो देखेला कोन ग्लोबल वेरिएबल बुझला जेमिति तमे गोटे घर भितर पसुच पसला पर जेतर बाहर को आसीबो प्रथमे घर भितर कबाटा बंद करिवो देन बाहर कबाटा बंद करिवो डिटो सेम जिंस होला nested block the example shown in the slide has an outer parent block and a nested child block the outer variable is declared in the outer block and inner variable are declared in the inner block outer block is local to the outer block but global to the inner block right outer variable moro outer pai moro local but inner pai seta global hela जेमिति तमे धर हमर एठी बाहर मेन गेट बाहर आमे गोटे सैनिटाइजर बोतल रखिछु राइट तो सेटा आमे जानिछु जे सेटा होची हमर बट जे भीतर अछि जे तमर जे स्टूडेंट आसे सी कोन जानिबो जे सेटा होची समस्त ताकू कोन कुआइछि जे नाही एटा होची आमे थोइछु हमर बोल बाहर थोइछि ना सेटा तो से जे स्टूडेंट आसला सी कोन जाला भीतर गोटे मोर सैनिटाइजर बोतल अछि भितरु जे पसला से सैनिटाइजर हे पसिलो बट बाहर डोर रे मु आ गोटे सैनिटाइजर रखिछि बाहर रे रखिछि तो जे स्टूडेंट आसला से भितरु जेता आसला से जानला जे नाही भीतर जोटा अछि सेटा ता पाई बाहर जोटा अछि सेटा बाहर लोकन पाई बुझला तो सेमिति तमरो बिगिन बॉडी बाहर जति डिक्लेयर करछ बा सेटा माने टोटल स्टेटमेंट पाई सेटा होची इनर ब्लॉक बट भीतर जो वेरिएबल टा जो डिक्लेयर करछ ता पाई सेटा होची ग्लोबल बुझला therefore outer variable is considered to be the global variable for all the enclosing blocks you can access the variable in the inner block as shown in the slide variable declared in PLSQL block are considered local to that block and global all its sub block inner block is local to the inner block and is not global because the inner block does not have any nested block. This variable can be accessed only within the inner block. If PLSQL does not find the variable declared locally, it looks upward in the declarative section of the parent block. PLSQL does not look downward in the child block. राइट PLSQL तमरो डाउनवर्ड रे केबे फॉलो करनी सी सदाले देखे जे कोटा प्रथमे एग्जीक्यूट करिया पय कुआइछि सेटा को प्रथमे एग्जीक्यूट करबो देन तापरे जहां भी कुआइछि जो सीक्वेंस कुआइ से सीक्वेंस से एग्जीक्यूट बट SQL स्टेटमेंट मोर कोन थला जे जेता मु इनर क्वेरी माने सब क्वेरी जेता मु क्रिएट करूछि से बाहर क्वेरी एग्जीक्यूट हो कि न हो प्रथमे से सब क्वेरी टाको माने इनर क्वेरी टाको एग्जीक्यूट करबो जो आउटपुट आसीबो सेटा आउटर क्वेरी रे असाइन करबो देन एग्जीक्यूट करबो बुझला declare गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला फादर्स नेम सेथरे देला पैट्रिक राइट एंड तार डेट ऑफ बर्थ ता देला सी देला सेठी डेट ऑफ बर्थ तार गोटे वेरिएबल भीतर स्टोर कला बिगिन डिक्लेयर भीतर मोर चाइल्ड नेम से पास कला माइक एंड तार डेट ऑफ बर्थ से पास कला बिगिन रो बॉडी भीतर हला एटा होची मोर इनर ब्लॉक इनर वेरिएबल एटा होची मोर ग्लोबल वेरिएबल ए दीटा बुझला then begin भीतर आउटपुट देखेला फादर्स नेम देखेला प्रथमे आउटपुट देखेला तमरो बर्थ डेट देखेला देन चाइल्ड नेम देखेला the dbms dot out output dot out put dot on the line date of birth date of birth and right date of birth तमरो date of birth तमरो शो करिवो बट एथरे शो कोन करिवो प्रथमे से शो कला तमरो सीक्वेंस अनुसार PLSQL कोनसी रेस्ट्रिक्शन नाही जे प्रथमे इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करिवो देन आउटर ब्लॉक एग्जीक्यूट करिवो तो प्रथमे सीक्वेंस अनुसार को सीक्वेंस प्रथमे फादर्स नेम टा प्रथमे एग्जीक्यूट करी देखेला तो एठी मोर आउटपुट को आसला फादर्स नेम प्रथमे तापरे फादर्स रो डेट ऑफ बर्थ को शो करिया पय कहला तो फादर्स रो डेट ऑफ बर्थ तापरे चाइल्ड रो नेम टा को शो करिया पय कहला चाइल्ड नेम टा शो कला देन तमरो चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ से शो कला बुझला examine the date of birth that is printed for father and child the output does not provide the correct information because the scope and visibility of the
variable are not applied correctly, the scope of variable is the portion of the program in which the variable declared and is assessed and is accessible. The visibility of a variable is the portion of the program where the variable can be accessed without using the qualifier. Then scope, the father's underscore name, father name variable, and the first occurrence of the date of birth variable are declared in the outer block. These variable have the scope of the block in which they are declared. Therefore, the scope of this variable is limited to outer block, right? Variable scope and visibility. Scope, the child name and date of birth variable are declared in the inner block or nested block. These variables are accessible only within the nested block, are not accessible in the outer block. Which variable is out of scope? PLSQL frees the memory used to store the variable. Therefore, this variable cannot reference, right? तो PLSQL automatic garbage collection थाए तारो जे कि देखे से जदि तमरो कोनोसी वेरिएबल ले कोनोसी वैल्यू जदि इनिशियलाइजेशन जदि हेइनी ताले से कोन करबो से वेरिएबल काम सला पर मेमोरी रु से वेरिएबल टाको रिलीज कर दो ताकि नुवा वैल्यू तमरो नेक्स्ट टाइम जेतले एक्सिक्यूट करियो नुवा वैल्यू तमरो से असाइन करबो से वेरिएबल बुझला. Visibility, the date of birth variable declared in the outer block has scope even in the inner block. However, this variable is not visible in the inner block because the inner block has a local variable with the same name, right? Examine the code in the executable section of the PLSQL block. You can print the father's name and child name and the date of birth. Only the child date of birth can be printed here because the father's date of birth is not visible, right? Child date of birth देखेबो केवल तमरो एथि पई जे फादर्स डेट ऑफ बर्थ तार विजिबल नो माने स्कोप ता तार नाही से बुझला. The you cannot have variable with the same name in a block. However, as soon in this example, you can declare variable with the same name into two different blocks, that is nested block. Two items represented by identifier are distinct. Changes in one do not affect the other, right? Same variable तमे केबे declare करि परिबो नाही बुझला. Then begin गोटे दला outer गोटे statement से दला माने outer बोली तम जानिबो गोटे फादर्स नेम डिक्लेयर कला गोटे डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर कला. देन बिगिन परे डिक्लेयर कला चाइल्ड वेरिएबल डिक्लेयर तारो जेमति तमरो थिला प्रीवियस तमरो वेरिएबल वैल्यू से असाइन कला एंड चाइल्ड रो से डेट ऑफ बर्थ भी असाइन. बिगिन रे फादर्स नेम से पास कला. देन डेट ऑफ बर्थ जो पास कला सेटा देखो से केम देइची डेट ऑफ बर्थ. देन outer v underscore date underscore of कारण कोन पई जे ए वेरिएबल रो नाटा जहा डिक्लेयर करछि आउटर क्वेरी रे आउटर वेरिएबल रे फादर्स रो डेट ऑफ बर्थ रो वेरिएबल टा सेम करछि तो सेति पई कंफ्यूजन. चाइल्ड रो डेट ऑफ बर्थ एटा को सिंटैक्स आउटर डॉट एटा सिंटैक्स को ना 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 सी कहछि PLSQL कहछि जे तमे गोटे ना रे वेरिएबल डिटा डिक्लेयर करि परिबो किछि कथा नै. एटा होची आउटर रे तमरो डिक्लेयर करछि एटा कोन बिगिन बॉडी रो बाहर डिक्लेयर करछि ये जो वेरिएबल टा एटा कहा पई तमे जानलो जे डिक्लेयर करलो जानलो जे एटा फादर्स रो डेट ऑफ बर्थ ता एटा वेरिएबल तारो एटा. बट इनर रे चाइल्ड रो गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करछि सेते तमे वैल्यू पास कर देछो माइक बोली पास कर देछो. देन चाइल्ड रो डेट ऑफ बर्थ भी सेम ना देछि तमरो आउटर रे डेट ऑफ बर्थ रो जो नाटा देछि, राइट? तो एबे जतेला मु डिस्प्ले करिबी कंपाइलर कंफ्यूजन हबो. मु जदि खाली जदि वेरिएबल रो नाटा पास कर दे कंपाइलर कंफ्यूजन हबो जे एटा कहार इनर चाइल्ड रो डेट ऑफ बर्थ शो करे पय कहछि या फिर फादर्स डेट ऑफ बर्थ शो करे पय कहछि. सेति पय तुमको एठी लेखिबा को पड़िबो आउटर जदि तमे फादर्स रो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करछो से पय ऊपर एठी मोर आउटर बोली डिक्लेयर करा बुझला. ऊपर एठी मोर आउटर बोली डिक्लेयर करा सेति पय एठी मेंशन करबो आउटर डॉट v अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ. ताले कंपाइलर जानिबो जे एटा होची आउटर वेरिएबल रो डेट ऑफ बर्थ टाको शो करिया पय कहछि माने फादर्स रो डेट ऑफ बर्थ टाको शो करिया पय कहछि बुझला. सेमिति मोर जदि तमे चाइल्ड जदि शो करिवो चाइल्ड रो सिंपल तमे डेट ऑफ बर्थ वेरिएबल टा पास कर दो शो कर दो कारण इनर ब्लॉक टा ही एक्सिक्यूट करूछ. तो इनर ब्लॉक रे तमरा लिखिबा दरकार नै कि इनर डॉट बोली वेरिएबल नाटा लिखिबा दरकार नै.
बट आउटर जेता डिस्प्ले करछो सेम ना जदी थिबो सेम ना वेरिएबल ना जदी थिबो ताले आउटर डॉट से वेरिएबल रो नाटा को तुम मेंशन करो बुझला using a qualifier with nested block. A qualifier is a label given a block. You can use a qualifier to assess the variable that have scope but are not visible. For example, in the code example, the outer block is labeled outer. Within the inner block, the outer qualifier is used to assess the date of birth variable that is declared in the outer block. जोटा कि outer dot तापर variable नाटा दोचो तम. Therefore, the father's date of birth and the child's date of birth can both be printed from within the inner block. The output of the following this, देखो, एटा मोर father's name display कला, जोटा कि हमारा previous query रो requirement अनुसार output टा show कला. एटा मोर father's name display कला, then father's date of birth display कला, then child name show कला, then child रो date of birth टा show कला. बुझला? Determining variable scope. से गोटे सैलरी गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला से देला 60000 वैल्यू तार पास कला देन कॉमन गोटे डिक्लेयर कला से मोर सैलरी इनटू 0.20 इनटू करी सैलरीटा मोर शो करिवो कोथरे ए वेरिएबल भितर शो करिवो देन गोटे मेसेज बोली गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला एलिजिबल फॉर कमीशन राइट गोटे मेसेजटा पास करी से गोटे वेरिएबल भितर शो कला माने स्टोर कला देन बिगिन भितर प्रथम मोर पास कला कोन सेम ना पास कला देखो एटी जो सैलरीटा पास कला एटी सेम वेरिएबल यूज कला बट एटा इनर ब्लॉक रे यूज करछ बुझला देन नंबर से इधर मोर 50000 देछि देन v कॉमर्स पुनी सेम कॉलम मोर माने वेरिएबल नाटा यूज कला से 0 देला असाइन कला देन टोटल कंपैरिजन सेटा मोर सैलरी प्लस कमीशन जो वैल्यूटा आसो सेटा टोटल कंपैरिजन भीतर मोर स्टोर हे के रहबो राइट देन बिगिन भीतर मैसेज चेक नॉट v मैसेज देन आउटर डॉट आउटर बोली मोटे डिक्लेयर करथली आउटर डॉट कमीशन तो एटा मोर काहा को एक्जिक्यूट करबो ए वेरिएबल टा को एक्जिक्यूट कर आउटर डॉट बुझला सेतिर मोर सैलरी इनटू 0.30 मोर देला से इनटू करी के तार मोर वैल्यूटा मोर स्टोर करबो ता बुझला देन मैसेज रो सेल्समैन मैसेज देला तो एठी से देछि आउटपुट देछि देखो डिटरमाइनिंग वेरिएबल स्कोप वैल्यू v मैसेज एट पोजीशन 1 एटा मोर पोजीशन 1 रे मोर शो करबो देन वैल्यू टोटल कंपैरिजन एज पोजीशन 2 टोटल कंपैरिजन मोर पोजीशन 2 रे शो करबो देन वैल्यू ऑफ कमीशन एट पोजीशन 1 वैल्यू ऑफ आउटर डॉट v एट पोजीशन 1 v कमीशन एट पोजीशन 2 v मैसेज एज पोजीशन 2 माने एटा सीक्वेंशियली एक्जिक्यूट करबो राइट जो सीक्वेंस है तमे एक्जिक्यूट करिया पे देछि ए तार आंसर देछि हले कोन माने से एठी देछि क्वेश्चन देछि को माने ए उडा को एक्जिक्यूशन करले कोनटा से आउटपुट दबो तो एठी से आउटपुट ता देछि हले यूज ऑपरेटर फॉर डेवलपिंग रीडेबल कोड एटा हमें काली पढी हला ये ऑपरेटर प्रोसेस होला परे हमें प्रैक्टिकल करियो ओके ठीक है थैंक यू